Assalamualaikum students, how are you? Today's topic is dialogue writing. Let's have a look at it. A dialogue literally means talk between two people. Dialogue writing is useful form of composition, especially for the second language learners who are trying to gain a command on spoken English. Under proper guidance, it should introduce these students to the colloquial way of talking English and train him to express his thoughts in easy and natural constructions. स्टूडेंट्स हम जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं हम लैंग्वेज को एक रिटन या राइटिंग स्टाइल में पढ़ना सीखते हैं. स्पोकन स्टाइल जो है या स्पोकन लैंग्वेज वो बहुत वीक होती है ऐसे स्टूडेंट्स की, सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स की. तो डायलॉग राइटिंग का पर्पज़ ये है कि ये स्टूडेंट्स को उस क्लोकियल वे ऑफ टॉकिंग के बिल्कुल करीब ले जाए ताकि वो उस लैंग्वेज को बोलने वाले स्टाइल में पढ़े. The spoken English of the second language learners is too often rather stilted and bookish. This is the reason the students who are the second language learners they read in a very literary or very formal style. They often try to speak it at the same time in the same way in spoken language. So their language is stilted and bookish, very formal sort of language when they try to speak. So owing to the fact that they have not much chance of talking with the English people, and anything that will help him to acquire naturalness and ease in speaking in English is of value. सो चूँकि ये सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए ये चीज़ बहुत कम प्रैक्टिस में आती है कि वो किसी फर्स्ट लैंग्वेज मतलब कि किसी इंग्लिश के साथ उसको बोलने का मौका मिले. तो यही रीज़न है कि वो जैसा बुकिश स्टाइल में इस लैंग्वेज को लर्न कर रहा होता है उसी स्टाइल में बोलने की कोशिश करता है. एंड दैट वे ऑफ स्पीकिंग इज़ क्वाइट स्टिल्टेड, इट इज़ क्वाइट फॉर्मल, जबकि बोलने वाला स्टाइल जो है वो बहुत इजी और बड़ा ही इनफॉर्मल होता है या यूजुअल स्टाइल होता है. तो उसके लिए डायलॉग राइटिंग जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा बना दिया जाता है सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के, so that they should use it in a colloquial way of talking. To write a dialogue successfully calls for a little dramatic power. So on the part of the writer who is going to write a dialogue, he should have some dramatic power. For the writer has not only to see both sides of the questions of a question, but has also to put himself, so to speak, inside two imaginary persons, so as to make them express their opposite opinions naturally and in keeping with their characters. So obviously, students, if the topic is some sort of argumentative topic and two characters are there, the writer should stand on both characters, on the sides of the both characters. अगर कोई एक ऐसा आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक है जिसके ऊपर दो कैरेक्टर्स जो हैं उनका डायलॉग लिखना है तो राइटर को दोनों तरफ की प्रोफिशेंसी चाहिए होगी ताकि वो उन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को एक पावरफुल तरीके से लिख सके. He has in turn to be each one and see the point of view of each of the question, कि उसको उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो बहुत क्लियर उसके माइंड में होना चाहिए. एंड सो दैट ही शुड राइट अ वेरी comprehensive sort of dialogue. A written dialogue should be composed that it appears to be spontaneous or impromptu. Spontaneous and impromptu, it means कि जो पहले से तैयार ना हो.
it is said here that it should look quite natural. The reader of it should not feel that it is meditated, stilted, and dull. At the same time, careful preparation is necessary for writing a dialogue. इसका मतलब ये नहीं है कि उसको spontaneous या उसको impromptu शो करने के लिए आप उसकी तैयारी ना करें. उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा. You should be quite careful to prepare to write a dialogue, though this must not appear. अगरचे कि आपकी उस डायलॉग में इस चीज़ को शो नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा इसको प्रिपेयर किया है, लेकिन उस इवन देन you should prepare it with a careful manner, in a careful manner, so that you can create a quite natural and comprehensive sort of dialogue. The writer must have the art to conceal his art. It is always advisable to make a plan or outline for the dialogue before beginning to write. Obviously, जिस तरह हर राइटिंग से पहले आपको एक प्लान बनाना पड़ता है, जैसे हमने पढ़ा था कि नैरेटिव राइटिंग के अंदर प्लॉट कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह से डायलॉग राइटिंग के अंदर आपको उसकी आउटलाइन बनाना होती है पहले. अदरवाइज द डायलॉग में बी रैम्बलिंग एंड पॉइंटलेस. अगर आप उसको विदाउट प्रिपरेशन लिखेंगे तो यू विल नॉट क्लियर मेंटली व्हाट यू आर गोइंग टू राइट. तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो रैम्बल करेंगे, वो पावरफुल नहीं होंगे और ना ही बामकसद होंगे. तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग के साथ उसकी प्रिपरेशन करना पड़ेगी. तो लेट्स हैव अ लुक एट द मेथड ऑफ प्रोसीजर. हम उसके प्रोसीजर को देखते हैं, उसके मेथड को देखते हैं. हियर आर सम पॉइंट्स टू पॉन्डर ओवर. लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन. केयरफुली थिंक ओवर द सब्जेक्ट गिवन and jot down briefly the arguments or opinions about in which might reasonably be expressed by the imaginary persons who are supposed to be talking. सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि अपने उस पॉइंट के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत केयरफुल वे में गौर करें कि वो क्या है, उसके ऊपर आप थोड़ी थिंकिंग करें. एंड देन जॉट डाउन ब्रीफली द आर्ग्यूमेंट्स. दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को राइट डाउन कर लें इन अ ब्रीफ मैनर विच माइट रीजनेबली बी एक्सप्रेस्ड. वो वाले पॉइंट्स जो वो दोनों कैरेक्टर्स उस डायलॉग के दरमियान एक दूसरे के साथ बोलेंगे, उनको आप ब्रीफ पॉइंट्स की सूरत में लिख लें. सेकेंडली, अरेंज दीज आइडियाज़ इन सम लॉजिकल ऑर्डर. फिर हम लॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं. पहले भी हर राइटिंग के अंदर हमने लॉजिकल ऑर्डर की बात की है, पर यहाँ पे लॉजिकल ऑर्डर क्या है कि एक इफ़ इट इज़ वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव सॉर्ट ऑफ डायलॉग जिसमें दोनों कैरेक्टर्स डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं और एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो उनमें से जौन सी ओपिनियन एंड पे आकर विन करेगी या जौन सी ओपिनियन दूसरे को कन्विंस करेगी, उसको एक लॉजिकल वे में बाय एंड बाय विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, विद पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स उसको बयान किया जाना है उस कैरेक्टर के थ्रू. एंड देन इट विल गो टू द क्लाइमैक्स and it will overpower to the other in the end. इसका ये लॉजिकल ऑर्डर है और इसी लॉजिकल ऑर्डर में आपको उस पूरे मुकालमे को, उस पूरे डायलॉग को पुट करना है. इट विल, पेरेंथेसिस में देखिए, इट इज़ वेल टू राइट डाउन दीज पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ एन आउटलाइन. तो क्या बेहतर है कि एक आउटलाइन की फॉर्म में आप उन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए एज अ गाइड टू फॉलो द राइटिंग देन इन राइटिंग द डायलॉग. Thirdly, to try to imagine
What would be the way in which each character in the dialogue would express his views? To do this, you must have in your mind a clear idea of the imaginary persons taking part in the conversation. सबसे पहले अपने माइंड में आपको उन कैरेक्टर्स को बिल्कुल क्लियरली बिठाना है और कि जो कुछ वो बोलेंगे वो अपने पॉइंट से रैम्बल ना करें, वो अपने पॉइंट से हटे ना, so as to make them speak in the character. For instance, these are some examples from this same book. And students, I'm going to tell you that this is a chapter from the Renan Martin's Grammar and Composition. तो उसमें कुछ डायलॉग्स का उन्होंने रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है. इफ़ यू हैव दैट बुक यू कैन रीड दैट. Keep in mind, fourthly, keep in mind that your dialogue, when completed, should read like a real, spontaneous conversation. इसमें कहीं भी बनावट नज़र नहीं आनी चाहिए. इसमें कहीं पे भी कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टिल्टेड वे में ना बोलें, डल और फॉर्मल वे में टॉक ना करें. एंड इट शुड लुक रियल, इट शुड लुक spontaneous sort of conversation. So try to make your imaginary characters talk in an easy, familiar and natural manner. Avoid stilted and bookish phrases. Try to remember how real people talk in friendly conversations and reproduce that conversational style as well as you can. तो हमें उसमें इस बात का ख्याल करना है कि जो कैरेक्टर्स की टॉकिंग है आपस में, जो उनकी कन्वर्सेशन है, जो गुफ्तगू है, वो बहुत ही ज़्यादा रियल वे में होनी चाहिए. उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई बड़े ही बुकिश किस्म के वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ नहीं किए जाने चाहिए. डायलॉग लिखने के लिए कुछ स्पेशल हिंट्स हैं, उनको देखते हैं. The first point is, don't let any of your characters monopolize the conversation. It means कि किसी एक कैरेक्टर की मोनोपली नहीं होनी चाहिए. ये ना हो कि आपके उस पूरे डायलॉग में सिर्फ चला जाए और दूसरा कैरेक्टर सिर्फ सुनता चला जाए और ऐसा लगे कि जैसे ये कोई पब्लिक लेक्चर है, डायलॉग नहीं है. इट मीन्स दैट बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स शुड बी इक्वली पावरफुल इन स्पीकिंग. गिव ऑल अ चांस एंड कीप द बॉल रोलिंग. मीन्स के पॉइंट्स दोनों तरफ के बड़े ही रीज़नेबल होने चाहिए. लेट द कन्वर्सेशन बी ब्रिस्क एंड रैपिड. पावरफुल और जानदार होनी चाहिए ये कन्वर्सेशन. Then real conversation. In real conversation, one person sometimes interrupts the other or breaks in, or what he's saying. Sparing use of such interruptions in written dialogues is quite permissible and adds to its naturalness. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम आपस में जब टॉक कर रहे होते हैं आम कॉमन लाइफ में, तो दूसरा शख्स ब्रेक इन करता है. इट मीन्स कि आपको दरमियान में ही वो टोकता है या आपकी बात को रोक कर अपनी बात करता है. तो such sort of interruptions are not very much permissible, but to show its naturality sometimes these are permissible. इनको अवॉइड किया जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार इनको आप नेचुरलिटी पैदा करने के लिए या एक नेचुरलनेस क्रिएट करने के लिए अपने डायलॉग के अंदर इस तरीके को आप दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए सेज, आई एम परफेक्टली सर्टन ही वुड नेवर डू सच थिंग. वाई नॉट ओनली द अदर डे ही टोल्ड मी. उसके बाद जो दो पॉजेज़ हैं या दो आपको डैशेस नज़र आ रही हैं छोटी सी, इट मीन्स दैट ही इज़ इंटरप्टेड बाय द अदर पर्सन. I don't care what he told you. I know for the fact that he did it. देखिए कि इस तरीके से उसने दूसरे बी ने ए को
की बात को काट कर अपनी बात की है, तो इट लुक्स क्वाइट नेचुरल, बट इट शुड बी यूज्ड इन अ केयरफुल वे, इन अ केयरफुल मैनर, कि बहुत ज़्यादा आपको इन इंटरप्शंस को अपने डायलॉग्स में नहीं डालना है, लेकिन कहीं कहीं आप ये यूज़ कर सकते हैं। In real conversation, a speaker often answers a question by asking another, or sometimes seeing what is coming. He answers a question before it is asked. ये भी एक नेचुरल वे है हमारी टॉकिंग के अंदर, कि आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो आंसर में क्वेश्चन कर देता है, या फिर ये होता है कि अभी उसके क्वेश्चन करने से पहले ही उससे पूछ लिया जाता है। सीइंग व्हाट इज़ कमिंग, ही आंसर्स अ क्वेश्चन बिफोर इट इज़ आस्क्ड, कि अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया होता और उसका आंसर आपको मिल जाता है। यू मे एनलिवन योर डायलॉग, लुक एट दिस वर्ड एनलिवन, या आप अपने डायलॉग में जान पैदा कर सकते हैं, उसको ज़्यादा नेचुरल बना सकते हैं, बाय मेकिंग योर कैरेक्टर्स डू द सेम नाउ एंड देन। बट लुक एट दिस वर्ड नाउ एंड देन, कि आपको ये बार बार यूज़ नहीं करना, बल्कि कभी कभार। फॉर एग्ज़ाम्पल, A and B says, what will you do if he does not answer your letter? Well, what would you do? देखिए कि उसके क्वेश्चन के आंसर में भी क्वेश्चन पूछा गया। Now let's move to the next one. D says, I heard something about you the other day, John. And John says, I know you are going to ask me why I was absent from the office last Monday, कि उसका क्वेश्चन पूछने से पहले ही उसको आंसर मिल गया। वेल, आई विल टेल यू, दिस इज़ अ नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग, नेचुरल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, एंड यू कैन एक्वायर दीज स्टाइल्स इन डायलॉग राइटिंग। इन रियल कन्वर्सेशन, people often use exclamations. Students, you can understand that what are the exclamations? These are interjections, expressions of different emotions like surprise, my word, good heaven, you don't say so, well, इस किस्म के वर्ड्स जो है ना वो सरप्राइज को शो करते हैं। एंड फॉर इरिटेशन, ओ डियर, कंफाउंड इट, प्लेयर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हाउ नाइस, स्प्लेंडेड, and so on. Such interjections may be introduced from time to time, sparingly, but the use of them should not be overdone. देखिए कि यहाँ भी आपको केयरफुल रहना है। आप जहाँ पे ज़रूरत हो उन इमोशंस के एक्सप्रेशन के लिए इन इंटरजेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, बट दीज शुड बी in a limited manner. Let's move to the next point. Point number 2, useful hints for writing a dialogue. A dialogue should begin in an interesting way so that the reader's attention may be arrested from the very first. किसी भी राइटिंग की ये कामयाबी होती है कि आप उसको ऐसे पावरफुल स्टाइल में लिखना शुरू करें कि शुरू ही से आपका रीडर जो है उसकी अटेंशन कैच कर सके, and the conversation should lead up to some definite conclusion and introduction. These are always very much important in your writing. It should not end abruptly and in the air, so to speak, कि आप किसी भी अपनी आर्ग्यूमेंट को रास्ते में ना छोड़ें, एकदम से ना छोड़ें कि फ़ौरन ही उसको बगैर किस फाइनलाइज़ किए या बगैर कोई पावरफुल कंक्लूजन दिए हुए उसको ख़त्म कर दें एब्रप्टली, सडनली, इट विल लूज़ ऑल द इफ़ेक्ट ऑफ योर राइटिंग. Special attention should be paid to the opening sentence and conclusion. And the third one, the fact that language should be as far as possible colloquial does not of course means that it may be ungrammatical. अब colloquial language को समझें कि वो क्या है. As written language is different from that one which is spoken by the people, and the spoken language in the common society is called colloquial language. बट इट डजेंट मीन दैट इट इज़ अनग्रामेटिकल. ये एक बड़ा ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि स्पोकन लैंग्वेज के अंदर ग्रामर यूज़ नहीं होती. दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. इट इज़ नॉट सो. हाउएवर,
आप जब भी लिख रहे हैं एक कॉमन इनफॉर्मल स्टाइल में भी लिख रहे हैं तो आपको ग्रामर को जहन में रखना है. हाउएवर फ्री एंड easy the style in which the persons in the dialogue are made to talk, they must talk good English. Being the students of English language, you should always keep in your mind that grammar is the structure of language. You should always keep in your mind that you should follow the grammatical rules in any way. They must not, for example, be made to use such expressions as, "Can I give you an advice?" This is a wrong expression. He asked me my brother and to tea. Wrong expressions are never acceptable in your writing anyway. The last point, keep these points in view. Write your dialogue in natural, interesting, and realistic a manner as possible. The whole conversation should be brief and the questions and replies as concise and pointed as possible. तो जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आपके डायलॉग्स बहुत ही नेचुरल और इंटरेस्टिंग होने चाहिए, हकीकत से करीब होने चाहिए और इतना जितना कोशिश हो सके कि आप उनको नेचुरल, रियलिस्टिक और इंटरेस्टिंग बनाएं. और होल कन्वर्सेशन शुड बी ब्रीफ. कि ये नहीं है कि एक कैरेक्टर जो है वो बोलता चला जाए और उसका डायलॉग जो है वो डायलॉग नहीं लगेगा बल्कि लेक्चर बन जाएगा. एंड द क्वेश्चंस एंड रिप्लाईज शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, कंसाइज, pointed and pointed as possible. So these are some rules that you should keep in your mind while writing your dialogue. Students, that's all for today, and I have already told you that I am reading from Brennan Martin. You should take this book and prepare this chapter. Okay, Allah Hafiz.